Hello friends, consent is the foundation of ethical medical practice. Without consent, no medical examination or treatment should begin. So what is consent? Consent defined as a free voluntary agreement or permissions given for the specific act or purpose. As per sections 13 of Indian Contract Act, two or more persons are said to consent when they agree upon the same things in a same sense. As per section 14, free consent as a consent that is not caused by coercion, undue influence, fraud, mispresentation और mistake. फ्री कंसेंट के कंपोनेंट्स को इस तरह से समझ सकते हैं. फर्स्ट, कोरेजन, किसी व्यक्ति को धमकी देकर या किसी प्रकार का बल प्रयोग करके कॉन्ट्रैक्ट करने का मजबूर करना कोरेजन कहलाता है. जब कोई व्यक्ति अपने विश्वास, अधिकार या पावर का दुरुपयोग करके किसी से कॉन्ट्रैक्ट कराता है तो उसे अनड्यू इन्फ्लुएंस कहते हैं. जानबूझकर किसी को धोखा देकर या गलत जानकारी देकर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए प्रेरित करना फ्रॉड कहलाता है. जब कोई व्यक्ति बिना धोखा देने की मंशा से फॉल्स स्टेटमेंट बता देता है और उसे स्वयं विश्वास होता है कि वह सही है तो इसे मिस प्रेजेंटेशन कहते हैं. किसी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में गलत धारणा या गलत विश्वास होना जिससे कॉन्ट्रैक्ट प्रभावित हो उसे मिस्टेक कहते हैं. Consent in the context of doctor-patient relationship means the grant of permission by the patient for an act to be carried out by the doctors such as clinical examination, diagnostic or surgical or therapeutic procedures. Consent को तीन तरीके से क्लासिफाइड किया जा सकता है. फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू पेशेंट इन विच इट इज़ टू टाइप्स, uninformed and informed consent. B, according to the way patient communicate it to the doctors. It may be implied when patient actions imply consent. Second, expressed when patient especially consent to examine either verbally or in written form. C, miscellaneous kind of consent included blanket consent, consent not taken for a specific purpose or procedure but in broad and vague terms. Such blanket consent is of no benefit to the doctor in alleged charge of negligence. Second, proxy consent, also known as substitute consent or surrogate consent, in which consent given by the relative, next of kin or friends in case of patient himself can't give consent. Consent of patient or relatives not required under following circumstances. First, emergency. Second, therapeutic privilege. Third, weighing of rights by patient. Fourth, medical legal autopsy. Fifth, armed force if medical examination is statutorily required. Consent protect both the patient and doctors. Clear communication is the key to ethical and safe medical practice. Thank you for watching.